हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टी एन पाई रिप्रेजेंटेशन एंड टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क। अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टी एन पाई रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी सबसे पहले हम टी रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टी रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर कोई भी एक नेटवर्क गिवन है जो कि टी की फॉर्म में है। ओके, सो दिस इज टी। यहाँ पे हमें एक नेटवर्क गिवन है जो कि टी फॉर्म, टी को हम स्टार भी बोलते हैं। ओके, सो इस फॉर्म में जो होते हैं उनको हम टी या स्टार रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर हमें कुछ इस तरीके से नेटवर्क गिवन है, दैट इज टी रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो डायरेक्टली हम उसका जेड पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज आई विल टेल यू अ शॉर्टकट फॉर टी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें तीन इम्पेडेंसेस गिवन है, दैट इज Z1, Z2 एंड Z3। इनपुट पोर्ट की जो वोल्टेज है दैट विल बी प्लस एंड माइनस V1 एंड इनपुट पोर्ट का जो करंट है दैट विल बी I1। सिमिलरली आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज इट विल बी V2 एंड current will be I2. Then what is the current which is flowing through Z2? It will be equal to I1 plus I2. अगर हम इनपुट लूप में KVL अप्लाई करें then we are getting, if we apply the KVL then we are getting V1 it is equal to Z1 into I1 plus Z of 2 and current flowing through Z2 is I1 plus I2. If we take I1 common then we are getting Z1 plus Z of 2 into I1 plus Z of 2 into I2. यहाँ पे हमें V1 इक्वेशन मिली in terms of I1 and I2 variables. Suppose this is equation 1. Similarly we will apply the KVL in the output loop. Okay, let us apply the another KVL equation. V2 it will be equal to Z of 3 and current flowing through Z3 impedance is I of 2 plus Z of 2 and current flowing through Z2 is I1 plus I of 2. This V2 it can be simplified as Z of 2 into I1 plus Z2 plus Z of 3 into I2. Suppose this is equation 2. Okay, यहाँ पे हमें V2 इक्वेशन मिल गई in terms of I1 and I2 variable. If we write both these equations together then we have, then V1 we are getting Z1 plus Z of 2 into I1 plus Z of 2 into I2. This was equation 1. Similarly we have V2 it is equal to Z of 2 into I1 plus Z of 2 Z2 plus Z3 into I2. This was equation 2. We can write both these equations in the matrix form. This will be equal to V1 and V2. Coefficient of I1 is Z1 plus Z of 2. Coefficient of I2 is Z2. Coefficient of I1 in the second equation is Z of 2 and coefficient of I2 in the second equation is Z of 2 plus Z of 3. Okay, and then we have variables on the right hand side is I1 and I2. यहाँ पे we are getting V1 and V2 is a function of I1 and I2. This is nothing but representing the Z parameter equation. This is the Z matrix for the overall network. Which is Z1 plus Z of 2. This is Z2. This is also Z of 2 and this is Z of 2 plus Z of 3. ओके, जो ओवरऑल नेटवर्क हमें गिवन है दैट इज टी रिप्रेजेंटेशन का जो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स है इट इज गिवन बाय Z1 प्लस Z2, Z of 2, Z2 एंड Z2 प्लस Z3. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ Z11 वी आर गेटिंग Z1 प्लस Z of 2, value of Z12 it is equal to Z21 it is equal to Z of 2 and Z of 22 value is Z2 plus Z of 3. We are getting all these values. हम इसको एक शॉर्टकट की तरह याद कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हमें कोई भी एक टी रिप्रेजेंटेशन गिवन है उसका हम डायरेक्टली जेड मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. तो अगर हमें Z11 की वैल्यू चाहिए वी हैव टू ऐड Z1 एंड Z of 2. ठीक है, तो Z1 एंड Z3 दे आर सीरीज इम्पिडेंसेस एंड Z of 2 जो है वो शंट इम्पिडेंस है. Z11 की अगर हमें वैल्यू चाहिए देन वी हैव टू ऐड Z1 प्लस
z of 2. Okay, and z12 it is equal to z21, it is equal to the shunt branch impedance value which is z of 2, and z of 2 value it is given by z2 plus z of 3. Okay, so you can remember this as a shortcut. So आपको equation solve करनी नहीं पड़ेगी, directly we can use this shortcut to calculate the z parameter matrix for t representation. Similarly pi representation के लिए भी एक shortcut है, but अगर आपको pi representation network given है that is also known as y represented network, then उसकी हेल्प से हम y पैरामीटर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो t की हेल्प से z पैरामीटर मैट्रिक्स मिलेगा एंड पाई की हेल्प से y पैरामीटर मैट्रिक्स हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं. फिर हम y को हम z या किसी और पैरामीटर में जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें एक पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्टा और मैश. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा और मैश नेटवर्क. सो इनपुट पोर्ट की जो वोल्टेज है दैट इज़ V1 एंड करंट इज़ I1. सिमिलरली आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज इज़ V2 एंड करंट इज़ I of 2. Okay, so it means V1 is a voltage across this Y1. so पाई रिप्रेजेंटेशन से हमें Y पैरामीटर मैट्रिक्स मिलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर Y पैरामीटर मैट्रिक्स में है तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वह एडमिटेंस होंगी. सो यहाँ पे हमें Y1 Y2 एंड Y3 कंसिडर करना है. अगर आपको इम्पीडेंस गिवन है तो फर्स्ट आपको उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस यू विल गेट द एडमिटेंस वैल्यू. सो यहाँ पे हमें Y1 Y2 एंड Y3 गिवन है. ओके, सो दिस V1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस दिस admittance Y1. so it means the voltage at this node is V1 and the voltage at this node, that is the voltage across Y3 admittance, is V2. Okay, so we can apply the KCL at both the node. So first I am applying the KCL at this node. Then this I1 current, it is equal to the current which is flowing through Y1. So we know that current is given by V by Z and 1 by Z is V into Y. So this is given by V1 into Y1, then plus what is the current which is flowing through Y2 admittance. So the potential difference is V1 minus V2 and it is Y of 2. So we can simplify this as I1 it is equal to, so let us take V1 common, this is equal to Y1 plus Y2 into V1 minus of Y2 into V2. Suppose this is equation 1. Now let us apply the KCL at V2 node. So I2 current it is equal to current which is flowing through Y3 admittance, it is given by Y of 3 into V2 plus current flowing through Y2 is potential difference is V2 minus V1. So it will be equal to V2 minus V1. So V2 minus of V1 and admittance value is Y2. So we can take common. So I2 value it will be equal to minus of Y2 V1. So this is minus of Y2 into V1 plus Y2 plus Y3 into V2. So suppose this is equation 2. Okay, so let us write both the equations together. So यहाँ पे we are getting I1 and I2 is a function of V1 and V2 variable. So we are getting I1 equation as, so I1 we are getting Y1 plus Y2 into V1 minus of Y2 into V2. This was equation 1. Similarly I2 we are getting minus of Y2 V1 plus Y2 plus Y3 into V2. So this was equation 2. We can write both these equations in the matrix form. So this is I1 and I2. So coefficient of V1 in the first equation is Y1 plus Y2. This is minus of Y2 and this is minus Y2 and this is Y2 plus Y of 3, and on the right hand side variables are V1 and V2. So this is nothing but the Y parameter matrix for the overall network, which is equal to Y1 plus Y2 minus of Y2 minus of Y2. This is Y2 plus Y3. So Y11 is Y1 plus Y2 and Y12 is equal to Y21 is minus of Y2. So let me write Y11 value is
y1 plus y2, y12 is equal to y21, it is equal to minus of y2, and y22 value we are getting y2 plus y3. okay, so shortcut we can remember as, so अगर आपको पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है, then if you have to find out y11, then this is the summation of y1 plus y2, that is y1 plus y2. so you have to consider the admittance value. okay, and y12 it is equal to y21, it is equal to minus of y2. okay, so minus sign will come when you are calculating y12 and y21. okay, and last if you have to calculate y22, then it is y2 plus y3. okay, now let us see a question. Calculate the y and z parameter of below given network. so this is means only a simple impedance is given which is connected in the series branch. सो जो नेटवर्क हमें गिवन है उसमें सिर्फ एक सीरीज ब्रांच में इम्पिडेंस प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है z, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट y एंड z पैरामीटर. सो सपोज इनपुट पोर्ट की जो वोल्टेज है दैट इज़ v1 एंड इनपुट पोर्ट का जो करंट है दैट इज़ i1. सिमिलरली आउटपुट पोर्ट वोल्टेज इज़ v2 एंड करंट इज़ i2. सो what is the value of i1 here? so i1 it is equal to current flowing through z1 which is given by potential difference that is v1 minus of v2 by impedance value is z. so we can write as 1 by z into v1 minus of 1 by z into v2. so suppose this is equation 1. now i1 current is flowing from left to right and i2 current is flowing from right to left. it means both the current are opposite. so i2 current it is equal to minus of i1. so i1 की equation we know, so it means we can find out the value of i2. it is equal to minus of i1. so it means it is equal to minus of 1 by z into v1 plus 1 by z into v2. so this is equation 2. so now we are getting i1 and i2 in terms of v1 v2 variable. it means we can develop the y parameter matrix. so simply if we write, we are getting i1 and i2, this will be equal to the coefficient of v1 in the first equation is 1 by z and coefficient of v2 in the first equation is minus of 1 by z. this is minus 1 by z and this is 1 by z and this is v1 and v2. so it means if we compare, we are getting the y parameter matrix for this network is 1 by z minus of 1 by z minus of 1 by z and this is plus 1 by z. so अगर हमें y parameter मिल गया directly, then we can easily calculate the z parameter. so we know that z parameter matrix is the inverse of y. so in order to calculate the inverse of this y parameter, we have to first calculate the determinant. so if we calculate the determinant, then we are getting 1 by z into 1 by z, this is 1 by z square and this will be equal to minus, and this minus into minus it will become plus. so this is minus of 1 by z square. it means जो y मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है it is becoming 0. so if the determinant is becoming 0, then what is z? it means y inverse will not exist. okay, so this implies that y inverse does not exist. okay, so if y inverse does not exist, this implies that the z parameter for this network does not exist. okay, so it means z parameter does not exist because determinant is 0 हो गया, then z parameter does not exist. so इस नेटवर्क के लिए सिर्फ y पैरामीटर मैट्रिक्स है एंड जिसकी वैल्यू है 1 बाय z माइनस ऑफ 1 बाय z माइनस 1 बाय z एंड y22 इज 1 बाय z. सो अगर हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व करें, देन हाउ वी कैन सॉल्व. ओके, सो द क्वेश्चन गिवन इज this and the value of impedance that is z is given. now let us try to solve. अब ना तो ये t की फॉर्म में है ना ये z की फॉर्म में है. ओके, सो let us try to develop the t network और pi network first. let us first develop the pi network. so pi network में we want like this. okay, so it means इसकी दो शंट ब्रांचेस भी होनी चाहिए. okay, so यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, देन वी कैन कंसीडर दैट सपोज यहाँ पे एक ब्रांच है
एज इट इज ओपन सर्किट तो उसका इम्पिडेंस कितना होगा, इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी ओम, बिकॉज ओपन ब्रांच का इम्पिडेंस कितना है, इन्फिनिटी होता है. सिमिलरली ये भी ओपन है, सो इसका जो इम्पिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी ओम. सो अगर हमें इम्पिडेंस पता है दैट इज इन्फिनिटी, देन व्हाट इज एडमिटेंस, सो वाई विल बी इक्वल टू 1/z. सो एज ओपन है तो उसका जो इम्पिडेंस की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, सो 1/infinity इज 0. सो इट मीन्स एडमिटेंस की वैल्यू विल बी 0 मो. सिमिलरली यहाँ पे जो एडमिटेंस है उसकी वैल्यू इज 0 मो. सो नाउ अगर हमें वाई मैट्रिक्स डेवलप करना है देन वी हैव टू फाइंड आउट द एडमिटेंस. सो इसके लिए जो वाई वैल्यू है दैट इज एडमिटेंस इज 1/z. सो नाउ इट्स वाई पैरामीटर मैट्रिक्स, इट विल बी इक्वल टू y1 plus y2 minus of y2 minus of y2 and then y2 plus y3. So y1 is 0, that is we have to consider the admittance value. So 0 plus 1/z is 1/z, then minus of y2, that is minus of 1/z, then again minus of y2 is minus of 1/z, and y2 plus y3, that is 1/z plus 0, so this is 1/z. So this is the y matrix for this network, and same हमने equation से भी calculate किया था, then we are getting the same answer. Okay, so we are getting same answer using the shortcut. Okay, now if we try to calculate z parameter, so z के लिए we have to develop that network in the form of t. So यहाँ पे we have this z. Okay, this is z. Now we have to develop a T network. So यहाँ पे as it is open, so again इसका जो impedance है वो infinity ओम है. So Z matrix develop करने के लिए हमें impedance चाहिए, so हम इसके admittance calculate नहीं करेंगे. Again as it is, so यहाँ पे क्या है कि we can this is given, so now we can consider or we can assume that a impedance is present. So as it is connected in series, okay, so we can consider that Z value is 0 here. Okay, so now if we try to develop the Z matrix, then it is given by Z1 plus Z of 2, Z2, this is Z2, and Z of 2 plus Z of 3. So Z1 value is Z, so Z plus infinity is infinity, Z of 2 is this value which is infinity, again Z2 is infinity, and Z2 plus Z3 is 0 plus infinity is infinity. It means Z matrix we are getting infinity. This means that Z parameter does not exist for this network. Okay, similarly we have to calculate the Z and Y parameter of the below given network. So सबसे पहले हम Z parameter calculate कर लेते हैं. तो Z calculate करने के लिए हमें T network टी रिप्रेजेंटेशन डेवलप करना है. सो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है. सो इट मीन्स वी कैन एज्यूम दैट यहाँ पे एक इम्पिडेंस प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है 0 ओम. सिमिलरली वी कैन एज्यूम दैट यहाँ पे एक इम्पिडेंस है जिसकी वैल्यू है 0 ओम. ओके, सो नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ टी रिप्रेजेंटेशन. So its Z parameter will be given by, so Z, it will be equal to Z1 plus Z of 2, Z2, this is Z2, and this is Z2 plus Z of 3. So Z1 value is 0, so 0 plus Z is Z, Z of 2 is Z, Z, and Z2 plus Z3 is Z plus 0 is Z. So this is the Z parameter matrix for this network. So it means Z parameter तो exist कर रहा है. Now we have to calculate Y. So अगर हमें Y चाहिए, then if we calculate the inverse of Z matrix, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. So इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज Z स्क्वायर माइनस ऑफ Z स्क्वायर विच इज़ 0, एंड वी नो दैट inverse is given by adjoint of Z divided by determinant of Z. So as determinant is becoming 0, Y parameter matrix we are getting infinity, which indicate that Y parameter is not existing for this network. Okay, so now if we try to find out using the shortcut, so अगर हमें Y parameter calculate करना है, then we have to represent the pi network for this. So let us develop the pi network. So यहाँ पे हमें only Z is given. Okay, so this is Z. Now
दिस इज गिवन, सो वी कैन कंसीडर, सो यहाँ पे एक सीरीज में कंसीडर कर सकते हैं. सो इम्पिडेंस विल बी 0 ओम. देन व्हाट इज एडमिटेंस? सो एडमिटेंस विल बी इन्फिनिटी मो. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, z की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, बिकॉज इट इज ओपन. सो इफ इट इज ओपन, z इन्फिनिटी है, देन y इज 0 mho. Okay, so this is 0 mho. Let me write the impedance value. So impedance is, z value is 0, and here z value is infinity because it is open. Okay, now let us find out the y parameter. It will be equal to, so y matrix, so first element is y11, which is y1 plus y2. so इसका जो admittance value है, that is 1 by z. so 1 by z plus infinity is infinity. y12 is minus of infinity, which is nothing but infinity. y21 is minus infinity, which is also infinity, and y22 is infinity plus 0 is again infinity. This implies that y parameter does not exist. Okay, for this network. So next question is, for the two-port network shown below, the short circuit admittance parameter matrix, it means we have to calculate the y parameter matrix. So यहाँ पे जो हमें network given है वो क्या है, एक पाई representation की form में given है. Okay, so अगर पाई representation given है, then directly we can find out its short circuit admittance parameter matrix, that is we can easily find its y parameter matrix. So its y matrix will be equal to y11, y12, y21 and y22. So we can use the shortcut. So अगर हमें y11 चाहिए, then it is given by y1 plus y2. y12 it is equal to minus of y2. y21 is again minus of y2, and y22 is y2 plus y3. So what is y1, y2 and y3? So this is y1, this is y2 and this is y3. बट यहाँ पे अगर आप देखें इस नेटवर्क को, तो जो वैल्यू गिवन है वो इम्पिडेंस है. ओके, बिकॉज यहाँ पे ओम गिवन है, एंड एडमिटेंस की यूनिट क्या है, मो होती है. सो इट मीन्स वाई पैरामीटर के अंदर एडमिटेंस वैल्यू आएंगे. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एडमिटेंस वैल्यू ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस. सो एज वी नो दैट y इज इक्वल टू 1 बाय z, एंड इम्पिडेंस की जो वैल्यू है दैट इज 0.5, which is equal to 2 mho. So it means the admittance of this branch is 2. Okay, so this is 2 mho, and this is also 2 mho, and the value of y3 is also 2 mho. Okay, so we can find, so y1 plus y2, that is 2 plus 2, it is equal to 4, minus of y2, that is minus of 2, and again minus of y2, that is minus of 2, and y2 plus y3, that is 2 plus 2 is 4. Okay, so this is the y parameter matrix for this network, matching with the option A. Okay, next question is, for the two port network shown in the figure, द इम्पिडेंस मैट्रिक्स. सो यहाँ पे क्या है, अगेन हमें पाई रिप्रेजेंटेशन गिवन है. ओके, सो यहाँ पे जो नेटवर्क गिवन है वो पाई रिप्रेजेंटेशन है. सो अगर पाई रिप्रेजेंटेशन है तो उसका हम वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द वाई पैरामीटर मैट्रिक्स. सो अगर हम नेटवर्क को देखें तो अगेन जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, इम्पिडेंस गिवन है, तो उसके हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. देन वी हैव टू कैलकुलेट वाई पैरामीटर, देन हमें उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, दैट वी कैन कन्वर्ट दिस पाई रिप्रेजेंटेशन नेटवर्क इनटू अ स्टार कनेक्शन. इट मीन्स वी कैन कन्वर्ट दिस पाई इनटू अ स्टार इक्विवेलेंट. ओके, so this is its star equivalent. Suppose this is z1 and this is z of 2 and this is z of 3. So let us find out the value of z1, z2 and z3. So it means जो network form होगा, we are converting this pi representation into t representation using the star delta transformation. Okay, so we are converting our delta, which is also known as pi representation, into star. So star is known as t. Okay, so now we have to calculate the value of z1. So z1, it is equal to, so this is connected between 10 ohm and 30 ohm. So this is given by 10 into 30 divided by sum of all the impedance, that is 10 plus 30 plus 60, which is equal to 10 into 30 divided by, this is 100. So z1 value we are getting as 3 ohm. Okay, now let us find out the value of z of 2, which is equal to, so z of 2, it is connected between 10 ohm and 60 ohm. So this is 10 into 60 divided by sum of all the impedance is 100. So it will be equal to 6 ohm.
Similarly, we can find the value of Z of 3, which is connected between 30 ohm and 60 ohm. So this is equal to 30 into 60 divided by 100. So Z of 3 value we are getting 18 ohm. So now we can redraw the circuit. Now हमने इस डेल्टा नेटवर्क को उसकी स्टार इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट कर दिया. So now we can replace that network. So we have obtained Z1, this is Z of 2, and this is Z of 3. Okay, so this is Z1, which is 3 ohm. This is Z of 2, which is equal to, so Z of 2 value we have calculated as 6 ohm, and Z of 3 is 18. So this is 6 ohm and Z of 3 is 18 ohm. So now this is our T representation. So T representation है तो directly हम इसका Z parameter matrix find out कर सकते हैं, which is given by, so its Z parameter will be given by Z11, Z12, Z21, and this is Z22. So it will be equal to, Z11 value is Z1 plus Z of 2, Z12 it is equal to Z of 2, Z21 is also Z of 2, and this is Z of 2 plus Z of 3. So आप इक्वेशंस लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि शॉर्टकट ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो Z1 is 3 and Z of 2 is 6. So 3 plus 6 is 9 ohm, and Z of 2 is 6, and again Z21 is 6, and Z of 2 plus Z of 3, that is 18 plus 6 is 24. Okay, so this is the Z parameter matrix for this question, that is 96624, that is option C. Okay, so C is correct. Now let us see the next topic, which is terminated two port networks. सो इस टॉपिक को हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. सो क्वेश्चन इज, अ टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ABCD पैरामीटर एज शोन बिलो. If the port 2 is terminated by R of L, the input impedance seen at the port 1 is given by. It means यहाँ पे क्या है कि हम एक टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है which is in the terms of ABCD parameter. Okay, so this is A, B, C and D parameter is already given. उसकी जो equations है, that is V1 I1 in terms of V2 and minus of I2, it is already given. Okay, so now it is saying that port 2 it is terminated by a resistance RL. So it means this is resistance RL, and we have to calculate the input impedance seen at the port 1. So this is port 1. So यहाँ से हमें इसका input impedance calculate करना है. So voltage is V1, input port की voltage, and current is I1, and for the output port voltage is V2 and current is I2. So we have to calculate the input impedance, that is we have to calculate Z1. So what is Z1? It is given by V1 by I1. So we have to calculate the ratio of V1 by I1, because हम input impedance calculate कर रहे हैं, and impedance is a ratio of V by I. So हम input port से calculate कर रहे हैं, that is why it is a ratio of V1 by I1. So let us solve. Okay, so let us draw the circuit in the next slide. So two port network is given, which is defined in terms of ABCD parameter. Okay, so this is A, B, C and D. So this is terminated by resistance R of L, and we have to calculate the input impedance. So input port की जो voltage है, that is V1, current is I1. Similarly output port voltage is V2 and current is I of 2. So we have to calculate the input port impedance, which is suppose Z1 given by the ratio of V1 by I1. Okay, so as network is two port network and it is defined in terms of ABCD parameter, then we know that this V1 it is equal to, सो ABCD के टर्म्स में जो V1 है, इट इज़ गिवन बाय AV2 माइनस ऑफ B इंटू I2. सिमिलरली दिस I1 इट इज़ गिवन बाय CV2 minus of D into I2. So we have to take the ratio of, suppose this is equation 1 and this is equation 2. So if we divide equation 1 and equation 2, then we will get the input impedance, but we have to make equation 1 and equation 2 right hand side in सेम वेरिएबल्स में बनाना है, बिकॉज यहाँ पे V2 एंड I2 है, सो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे. सो इफ़ वी सी एट द आउटपुट पोर्ट, दैट इज एट पोर्ट 2, सो एज V2 is the voltage across this resistance, so V2 is
the voltage across this resistance, current is entering from here, so this is positive and this is negative. So what is V2? Opposite polarities are here. So this V2, it is equal to minus of resistance value is R of L and current flowing is I2, because I2 is entering from this terminal. Okay, so that is why this is positive and this is negative. So V2 की जो polarity है वो opposite है, that is why it is minus of R of L into I2. Okay, so let us substitute this value as V2, it is equal to minus of RL into I2. We will substitute this V2 value in equation 1 and 2. Okay, so Z1, it is obtained by taking the ratio of V1 by I1. So V1 value is AV2 minus of B into I2 divided by CV2 minus of D into I2. So let us substitute the value of V2, which is equal to minus of RL into I2 minus of B into I2 divided by C into V2 value is minus of RL into I2 minus of D into I2. So let us take minus of I2 common. So this will be equal to A into RL plus B divided by CRL plus D. Okay, so this is the answer, that is ARL plus B divided by CRL plus D, which is option. So we have obtained ARL plus B divided by CRL plus D. So this is option D. Okay, so D is correct. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लैडर एंड लैटिस नेटवर्क एंड वी विल आल्सो सी इमेज इम्पीडेंस. सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.